Hello children, this side Ma'am Varsha and this is the third lecture of lesson 2 economics, sectors of the Indian economy. In the previous videos you have learned about the different sectors of the Indian economy and we have also learned that how do we compare these three sectors and what is the final goods and services and what is the mean of GDP, gross domestic product, how we calculate this GDP, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year is known within the country. Okay, don't forget it, value of all final goods and services produced only within the country. Okay, so that is known as the gross domestic product. Today in this video we'll learn about the what are the historical changes came into the sectors. Okay children, so what are the main changes came across in this all these economic sectors? Historical changes in sectors. In initial stages of development, primary sector was the most important sectors of economic activity. Means number of or the majority of the population they were occupied with the primary section for their livelihood. As the methods of farming changed and agricultural sector began to prosper, okay, it produced much more food than before. हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हुए, तो उससे क्या हुआ बच्चों, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, है ना. तो मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़ एंड दिस गिव राइज टू सर्विस सेक्टर. तो अब उसको क्या करना था उनको, दे वांट टू सेल दैट, तो उसको बेचने के लिए उनको चाह, तो दे स्टार्टेड टू प्रोवाइड द सर्विस सेक्टर. ओके, ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप, है ना. बहुत लंबे समय के बाद में अब जैसे जैसे ये सब कुछ होने लगा तो उसके बाद में जो फैक्ट्रीज हैं वो बनने लगी, फैक्ट्रीज आने लगी एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और उनका विस्तार होने लगा. दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज ऑन लार्ज नंबर्स. अब जो पहले फार्म्स में काम करते थे दे स्टार्टेड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज. Secondary sectors gradually became the most important in total production and employment in the past 100 years. Okay, अब प्राइमरी सेक्टर से भी ज़्यादा जो था सेकेंडरी सेक्टर बेटा इंक्रीज़ हो गया था, प्रॉस्पर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहले फार्म में काम कर रहे थे, है ना, फार्म में काम करते थे, उनको इतना ज़्यादा ऑक्यूपेशन, उनको डेली वेजेस भी नहीं मिल पाता था, अच्छा वेजेस नहीं मिल पाता था, बहुत सारे लोग अननेसेसरी उसमें लगे हुए थे. तो दे स्टार्टेड टू वर्किंग इन द फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज, दे आर देयर, दे कैन अर्न एक्स्ट्रा. ओके, तो वहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ. There has been a further shift from secondary to tertiary in developed countries, और उसके साथ ही जो टर्शरी सेक्टर था, है ना, तो वहाँ पे वो डेवलप हुआ. जब जैसे सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव हुआ तो पीपल दे कैन अर्न मनी, मोर मनी, सो दे वांट मोर सर्विसेज, है ना, दे वर एबल टू ऑक्यूपाई द सर्विसेज. सो दिस सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed country. इस तरह से जो हम देखें कि इंडियन सेक्टर्स में, हिस्ट्रीज में जो ऑल द सेक्टर्स है उसमें क्या चेंजेस आए. सो वी कैन कम टू नो दैट कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, नाउ एट द प्रेजेंट टाइम द टर्शरी सेक्टर, there is a very great increasement in the tertiary sector. So through this description we can come to know that कि प्राइमरी सेक्टर से किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, डेवलप हुआ, हाँ, और उसमें पीपल नाउ दे वर एबल टू अर्न मोर. सो नाउ देन द सर्विस सेक्टर हाउ इट इज़ डेवलप्ड, ओके, इन द डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, so we come to know that what are the and what were the historical changes are there. Okay, so revise your chapters, videos. In next video we'll learn about the different this comparison of these sectors, what is the contribution of all these
three sectors, okay, in the GDP and GNP or employment. Till then, revise your chapters. Bye.